Doodh Ganga, also known as Chachkol, once flowed gracefully through the heart of Kashmir, earning its name for its milky white purity of its waters. Originally from the glaciers of the Pir Panjal Mountains, it served as a lifeline for over 5 lakh people. Because of the crystal clear white milky water, this was named Doodh Ganga. Doodh, which means milk. Doodh Ganga emerges from the mountains of Pir Panjal, from the glaciers of Pir Panjal. As the name it depicts, Doodh Ganga means the water of milk. This used to be clean drinking water. It was milky, it was white. हम जब ट्रैकिंग पे जाते थे दूध गंगा एरिया में, तो वहाँ ऐसा दिख रहा था दूध गंगा, बिल्कुल दूध ही है। इसको दूध गंगा ऐसे नाम नहीं पड़ा है, ये दूध जैसा पानी वहाँ से आता था। मैं इस वक्त दूध गंगा ग्लेशियर के सोर्स पे हूँ और मेरे पीछे यहाँ पे दूध गंगा का ग्लेशियर है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नदी है, कितनी साफ सुथरी नदी है ये, कितना जो हमारे पे कुदरत का, हमारे पे ये जो एक कुदरत का करिश्मा यहाँ पे है। पर अफसोस की बात है कि जब ये नदी चाडोरा पहुँचती है, छानपोरा पहुँचती है, बरजुला पहुँचती है या करालपोरा पहुँचती है, ये कितनी गंदी होती है, कितनी मैली होती है। हम कितने जालिम बन गए हैं। हम ऐसा क्या बोलते हैं, अपना पूरा सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट इस नदी के अंदर डालते हैं। However, the tale of Doodh Ganga has taken a tragic turn in recent decades, as unchecked urbanization, pollution, and neglect have transformed this once majestic river into a polluted drain. Every citizen who lives near Doodh Ganga, who lives on the banks of Doodh Ganga, all the localities, all the residential colonies, all the shopping complexes which have been set up near the banks of Doodh Ganga, we are all responsible for this. From Chadura to Srinagar, the entire stretch of Doodh Ganga is now marred by the indiscriminate dumping of waste, further exacerbating its plight. Unfortunately, due to urbanization, due to population explosion, and unscientific practices adopted by people, the water in Doodh Ganga has got polluted. Despite being a vital source of drinking water for uptown areas of Srinagar, Doodh Ganga's waters have become increasingly unhygienic and unsafe. The unchecked pollution and encroachment along its banks have compromised the quality of water supplied to communities, posing a grave risk to public health. Restoring Doodh Ganga to its former glory requires both scientific interventions and mass public participation. It is not merely a river, but a vital component of Kashmir's ecosystem, and its restoration is a collective responsibility that must be shouldered by both the government and the people. मैं इस वक्त दूध गंगा किनारे पे खड़ा हूँ करालपुरा में। ये वही दूध गंगा है जो आज से 5-10 साल पहले क्रिस्टल क्लियर वाटर हुआ करता था। 2008 तक हम इसमें नहाते थे, इसी का पानी पीते थे डायरेक्टली। योस आब साफ शफाफ, यथ मुझ वंकन खोन क्युत आब नवान नाटन मज, यथ मुझ हेको न वंकन अथ त त्रयित, युत छ गंद गोमुत। यह कोर पन्ने अथो खराब, अरे यथवा लद्दाखुक या बिहारुक तमि त्रो यह छोट, यह कोर पाने खराब। All the liquid waste enters into it,
all the solid waste is being dumped into it, and you can see all the liquid waste coming out from that huge pipe, and then the pipe at the backside, another pipe. So, so I don't think it's Doodh Ganga now. Water in Doodh Ganga is no more milky now. It's not Doodh Ganga now. I call it Kali Ganga because the water has been completely polluted. Pollution in Doodh Ganga is clear violation of Water Act 1974. The same water is supplied to people after chlorination or gasification. But no steps are taken to control this pollution in this Doodh Ganga. Furthermore, the river's passage through Hokersar wetland, a designated Ramsar site, is being threatened, further endangering its fragile ecosystem. This is a stark violation of the Wetlands Conservation and Management Rules 2017. Dead animals, solid waste, liquid waste, it has polluted the waters of Hokersar, which is a wetland and an abode for millions of birds, migratory birds, who visit Kashmir during winter months. और मैं इस वक्त चाडोरा टाउन में हूं और दूध गंगा के किनारे पे यहाँ पे आप जो ये दूध गंगा देख रहे हो इसकी हालत माइनिंग की वजह से हुई है. Because of illegal mining, the depth is enormous. Under the J&K minor mineral concession rules, the mining is to be done until 1 meter deep, but they have gone as deep as 15 meters. So water level is receding, it's going down, it's not, our agriculture fields are not getting irrigated. They were using JCBs, heavy cranes. I had to intervene. I had to file a petition in the National Green Tribunal. They slapped a penalty of 35 crore rupees. Out of that, 3 crore rupees were deposited, and those 3 crore were deposited in the account of District Magistrate Badgam, and they have to be spent on the restoration of Doodh Ganga. Because of that petition, government sanctioned around 149 crore rupees for setting up of sewage treatment plants on Doodh Ganga. Just as Kashmir is the crown jewel of the country, its water bodies, including Doodh Ganga, are its precious gems. It is imperative that we act now to preserve and protect this invaluable asset for future generations, especially in the face of changing climatic patterns and environmental challenges. आज 23 मई 2024 है. पीछे आपने देखा ही होगा कि हमने दूध गंगा की हालत आपको दिखाई है. मैं इस वक्त ब्रनवार में हूं और यहाँ पे दूध गंगा के किनारे पे बैठा हुआ हूं. जो पानी हमें ब्रनवार में मिल रहा है, चाडोरा टाउन में मिल रहा है दूध गंगा का साफ, वो करालापुरा में भी मिले, वो मोछुआ में भी मिले, वो वाथोरा में भी मिले, वो होकरसर में भी मिले, वो जहलिम में भी मिले. कम से कम जितना भी बचा हुआ है अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको भी बचा लेना चाहिए. जन्नत का टुकड़ा देखे, ऐसे टुकड़े अल्लाह ताला ने हमको पूरी दुनिया में दिए और खासकर कश्मीर में हमें हर जगह पे हमें ऐसे जन्नत के टुकड़े मैसर हुए हैं. हम कितने खुशकिस्मत लोग कि हम इस कश्मीर में पैदा हुए. अल्लाह ताला ने हमें पानी दिया है, ग्लेशियर्स दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, ग्रीनरी दी है, फूल दिए हैं, इतने रंग बिरंगे फूल यहाँ पे, और इसकी अगर हमने कदर नहीं की, अल्लाह ताला ये हमसे छीन लेगा.